हाय एवरीवन, दिस इज़ बोनस और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको स्टॉक के बारे में, जो कि पूरा डिटेल में बताऊँगा आपको स्टॉक, जैसे कि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। क्योंकि एक अच्छा स्टॉक आपके पास नहीं होगा तो एक अच्छा क्लासिकल मदर सॉस भी नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि एक स्पैंगनॉल, वल्लूते, ये सब स्टॉक के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें पूरा इंग्रेडिएंट्स बताऊँगा कि क्या क्या स्टॉक में जाता है और कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स ही हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं स्टॉक के लिए। लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक और उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अ स्टॉक मे बी डिफाइंड एज अ क्लियर थिन, दैट मीन्स अनथिकन्ड। ठीक है, स्टॉक अनथिकन्ड होता है। लिक्विड फ्लेवर्ड बाय soluble substances extracted from the meat, poultry and fish and their bones, and from vegetables and seasonings. पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रैक्टेड होता है। ठीक है, सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री। आप समझ पा रहे हैं मेन क्या होता है स्टॉक में? आपको एक इजी वे में बता देता हूँ कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, पोल्ट्री, फिश, वेजिटेबल्स, सीजनिंग, इन सब के फ्लेवर जो है वो जो लिक्विड में आ जाता है, वो लिक्विड को हम बोलते हैं स्टॉक। बहुत ही सिंपल है, राइट? सिलेक्ट द इंग्रेडिएंट्स एंड देन एक्सट्रैक्ट द फ्लेवर। ये होता है स्टॉक। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स, बोन्स, major ingredient of stock. Let's see. Most of the flavor and the body of stock are derived from the bones. उसको बोलते हैं हम carcass. ठीक है, the bones, carcass of beef, whale, chicken, fish and sometimes lamb, pork, ham and game. ठीक है. When it comes to vegetable stock, so we draw the flavor entirely from vegetables. See, जब वेजिटेबल स्टॉक आता है ना, लाइक वेजिटेरियन स्टॉक्स एंड ऑल, वो क्या होता है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल से ही ली जाती है, जो भी फ्लेवर है उसका। ठीक है, देयर इज नो बोन्स। ऑब्वियसली वी कांट इवन यूज अ सिंगल मीट व्हेन इट कम्स टू प्योर वेजिटेबल या वेजिटेरियन स्टॉक। ठीक है, जैसे कि चिकन स्टॉक फ्रॉम द चिकन कार्कस, फिश स्टॉक कहाँ से आएगा? फिश बोन से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लूते 3 टाइप ऑफ स्टॉक से बनते हैं। ठीक है, सी फूड स्टॉक, फिश स्टॉक, चिकन स्टॉक, बीफ स्टॉक, वेल स्टॉक, डिफरेंट मीट, डिफरेंट स्टॉक के हिसाब से डिफरेंट वलूतेस बनते हैं, राइट? सो उसी तरह यहाँ पे चिकन स्टॉक चिकन कार्कस से, फिश स्टॉक फिश बोन से। ठीक है, बोन्स फ्रॉम लीन वाइट फिश। लीन वाइट फिश गिव्स द बेस्ट स्टॉक। फैट फिश आर नॉट नॉर्मली यूज्ड। यू नो व्हाट, फैट फिश क्या करता है कि इट जस्ट मेक द स्टॉक क्लाउडी एंड वी वांट अ क्रिस्टल क्लियर stock. For that reason we don't use the fat fish. ठीक है, fume, flavorful fish stock. So fume means a flavorful fish stock. Depends on what exactly aromatic vegetable we are using for making that particular stock. ठीक है, lamb, game, turkey and other stocks have specialized used. ये एक्चुअली इतना पर्टिकुलरली बनता नहीं। सबसे ज़्यादा स्टॉक में आता है आपका चिकन, ठीक है, और फिश। ये दोनों स्टॉक सबसे ज़्यादा बनता है। उसके बाद या पीपल यूज टू मेक इन यूरोपियन कंट्रीज द बीफ स्टॉक विच इज़ वेरी पॉपुलर देयर। लेट्स टर्न द पेज फॉर अ क्वालिटी स्टॉक। देखो, ऐसा है कि इसको समझना है हमें कि क्वालिटी स्टॉक कैसे पता चलेगा आपको जो स्टॉक है वो परफेक्टली बना है कि नहीं, उसका क्वालिटी कैसे पता चलेगा हमें। कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड कोलेजन, हियर वी गो, दे फॉर्म जिलेटिन, दे गिव्स बॉडी टू अ स्टॉक। क्वेश्चन मार्क, हाउ टू फिगर आउट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टॉक? कैसे पता चलेगा यहाँ पे? वेल मेड स्टॉक थिकन्ड और इवन सॉलिडिफाइड व्हेन चिल्ड। एक अच्छा स्टॉक यदि वो चिल होने के बाद एक अच्छा सॉलिड और एक जेली कंसिस्टेंसी हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम एक बेस्ट स्टॉक। इसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि जेलेटिन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, कौन से पार्ट ऑफ बोन या फिर कार्कस में कौन सा एरिया में सबसे ज़्यादा जेलेटिन होता है, जो कि एक अच्छा बॉडी देता है स्टॉक को। बेस्ट सोर्स ऑफ जेलेटिन इन बोन कहाँ पे? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। जो जहाँ जॉइंट्स है हमारे बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में, वो एरिया में सबसे ज़्यादा कार्टिलेज होता है। यू नो, काइंड ऑफ अ ग्लू, वाइट कलर का ग्लू होता है यहाँ पे, एक जिससे कि फ्रिक्शन होता है, ये मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जेलेटिन इन बोन्स। यंगर एनिमल्स हैव अ लॉट्स ऑफ कार्टिलेज इन देयर स्केलेटन. As they become older, this harden into solid bones which is harder to dissolve in stock. जब इनका एज कम होता है तो like the bones are very tender, right? Very tender, easy to bite,
राइट जैसे कि वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, उनका एज बढ़ता है, उनके बॉडी में काफ़ी एक्सरसाइज हो चुका होता है, राइट, लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड ऑल। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो बोन्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, लाइक डे बाय डे गेटिंग कैल्शियम, गेटिंग मोर एंड टफर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, जब हम बोन्स को स्टॉक में डालते हैं, धीरे धीरे उसको प्रोसेस करते हैं, तो इतना टेंडर होगा, उतना अच्छा हमें एक प्रॉपर वाला जो है जेलेटिन मिलेगा, ठीक है, और उसी से एक अच्छा स्टॉक भी बनेगा, राइट। If you require a good amount of gelatin, so here I have these bones are the best for making stock because these bones are containing a high amount of gelatin, right, but depends on the age, ठीक है। knuckle bones like lot of cartilages, like lots of cartilage, right, neck bones, shank bones। अब यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको ब्रॉथ के बारे में। ब्रॉथ क्या होता है, जस्ट लाइक अ स्टॉक, बट जो हम कार्कस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बोन्स यूज कर रहे हैं स्टॉक के लिए, यहाँ पे हम होल मीट यूज करेंगे। Here we go, let's figure it out. Results of simmering meat or poultry. Here we go. Result of simmering meat or poultry. Here I not mention any bones, ठीक है। तो डायरेक्टली मीट और पोल्ट्री का डायरेक्टली इनका मीट और फ्लैश जाएगा, क्लियर। ब्रॉथ कैन बी यूज लाइक अ स्टॉक, कैन बी स्टॉक, बट स्टॉक कैन नॉट बी यूज एज अ ब्रॉथ, ध्यान रखना इस चीज को। Broth to mean a flavorful liquid obtained from the simmer of meat and or vegetables. See, broth में क्या होता है, flavorful liquid होता है, क्योंकि broth को flavorful liquid इसलिए बोला गया है because इसमें हम यूज कर रहे हैं मीट, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे कर रहे हैं बोन्स। बोन्स में क्या होता है, उतना फ्लेवर होता ही नहीं है, द रेसिड्यू बोन्स में उतना फ्लेवर नहीं होता है जितना कि एक मीट में होता है, राइट। इट्स द रीजन जिसमें मीट होगा उसको बोलते हैं ब्रॉथ, इतना बस ध्यान रखिएगा आप। ब्रॉथ टू बी मीन एज अ फ्लेवरफुल लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम द सिमरिंग ऑफ मीट एंड और वेजिटेबल्स, क्लियर, सो दैट इज कॉल्ड ब्रॉथ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मिरपॉ, क्लियर, a combination of onion which is 50%, carrot 25% and celery is 25%। देखो आपको यदि भूल जाते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, राइट, कि 50% कौन सा था यार, समझ में नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा। ये दोनों है काफी थिक एंड दिस इज इनटू लेयर्स, ठीक है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि अनियन का लेयर्स होता है और बहुत ही पतला होता है, राइट, वेरी थिन, इसलिए इसमें 50% यूज करते हैं। और कैरेट्स आर वेरी थिक and concentrate, so we using 25%, and celery also concentrate and thick, like have a layers but still is very concentrate, right, so we're using only 25%, 50%, 25%, 25%, ठीक है। अब बेसिक can't skip, ये हर कुकिंग में यूज होता है ये, ठीक है, we can't skip for the flavor agent, also used for soup, sauce, meat, poultry, etc., used in all area of cooking, you can see we can't skip this mirepoix. This is one of the important element when it comes to stock, broth, you make any kind of a dish. Mirepoix is like the basic. Clear? Let's go to the next page. The classical mirepoix contains a wider variety of ingredients, sometimes includes the ham or bacon. See, generally we use ham and bacon in espagnole sauce, or if you're making something a different kind of a stock, then you can use this one, ठीक है। Otherwise, mainly actually ये जो ham और bacon है, we're making espagnole sauce, a brown stock, ठीक है। So we use ham and bacon, which gives a really nice flavor. So एक classical mirepoix जो होता है उसमें हम लोग ingredients add करते हैं, जैसे कि normal mirepoix, onion, carrot, celery, then additional we add ham, bacon, leek and other vegetables and one or more fresh herbs. Fresh herbs like thyme, rosemary, depends on you and what kind of a meat you are using. White mirepoix, colorless, avoid color. You can figure out easily the white mirepoix means we don't want to entertain any color to come in this particular stock. Clear? Parsnips. It has a layer, a thin layer of a brown, a very fade brown. Okay, like, and when we just take the skin out, like when we peel it up, it looks like a radish. But it tastes very sweet and is very very juicy. Parsnips are substituting the carrot. Why? Because the carrot is an orange color, and when we're gonna cook it, so the carrot get caramelized and give the color, right? For that reason, we are substitute with parsnips. This is white color, no harm to the stock, right? It's still gonna be colorless. For fish stock, white beef or whale stock, we generally use white mirepoix. Mushroom trimming, definitely mushroom is a white, so yeah, we can use a mushroom trimming. Leek in the mirepoix in place of part
of onion in a white mirepoix. You can see the leek is substitute of onion. Why? Onion looks white, right? We have white onion, so why we are changing into leek? Because when we saute the mirepoix, it start caramelization, right? And the onion has sweetness. It will get caramelized and will give the color to the stock. For that reason, we use the leek. Leek won't caramelize. Clear? For that reason, we are using the leek instead of onion when it comes to white mirepoix. Clear with this? Cutting mirepoix and capacity. See, this is one of the most important when it comes to stock, to understanding the cuts size of all the vegetable really matters. How? Let me tell you. The size of the vegetables, right? It should be equal. People say like mirepoix is all about roughly chopped. When we're roasting the vegetables or we are sauteing the vegetables, if it is not the similar size, so what happens? Some few vegetable will get burned in the high temperature and some few are just not even roast properly. For that reason, if it all in a proper shape or proper size of a vegetable, so what happens? Equally distribute of heat to all the part of the vegetable and all the vegetable will get cooked simultaneously, right? And evenly. For that reason, if you're cutting any vegetable, just keep in mind that the size and the shape will be remain same, जिससे कि कोई भी जलेगा नहीं और properly even distribute of heat, तो हर एक vegetable का जो रहेगा वो cook भी हो जाएगा अच्छे से, right? For that reason, size and cuts matters when it comes to the cutting of mirepoix and understanding the capacity of that particular vegetable, that how much that particular vegetable has the moisture and which of the vegetable doesn't have lot moisture. So what happens when it comes to moisture and not having a moisture, so this will not gonna burn because it has a moisture. It will take a little bit time to cook, but this is like doesn't have a moisture as compared to this will get start burning, right? So understanding this thing, so understanding the capacity of the vegetable is very important, right? Hope you understand this. Acid products is also an important part when it comes to stock because it helps to balance the flavor. Okay, so let's see. It helps dissolving the connective tissues. See, the bones what we are using, like the carcass, right? What happened? The acid helps to take it out, the collagen, the gelatin from the bone. जो bones में जो gelatin होता है, acid helps to take that out. Okay, that's the reason we also add a little bit of acid and also to balance the flavor. Clear? Used in stock making to extract the flavor and body from bones. Here we can see. Here we see. Right? अभी बताया था मैंने आपको कि stock में जो bones यूज करते हैं उसके क्या करता है, उसके body में से जो flavor होता है उसको extract करता है. कौन? Acid. Clear? Tomato product contribute flavor and some acid to brown stock. When it comes to brown stock, actually is all about Spanish sauce. We actually use the tomato paste which comes in the tube. Very high is very concentrated and highly acidic. That's completely preserved in the tube. Okay? No for white stock because of the undesirable color. For the white stock, we will not entertain the onion or carrots in them, right? Because of the color. So how we can just add tomato? But we still require a little bit of acidic, right, when it comes to a stock. So what we do, white wine used for fish stock as acidic. ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम लोग जब white stock के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे white wine यूज करते हैं for the acidic, and for the other stock we are already using the tomato product, right, for the acidic, right? Not to add too much of tomato can make the stock cloudy. It won't look good. Clear? Let's go to the next page. Seasoning and spices. Salt is usually not added when making stock. Why? Let's figure it out. When we reduce the stock, means concentrate, or you can say concentrated for the glaze, it becomes more salty. For that reason, we won't add salt in stock. So sometimes we reduce the stock, right, for the glaze. तो क्या होता है कि वो जो water evaporate होता है and it comes to half, means reduction, जो salt होता है उसका काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है. ठीक है. और सेकंड बात यह है कि जब भी हम स्टॉक यूज़ करते हैं कोई भी डिश में, यदि हम कुछ भी डिश बना रहे हैं और उसमें ऑलरेडी सॉल्ट है,
और स्टॉक उसके बाद हम ऐड करेंगे और उसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट है तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा, इसलिए हम सॉल्ट को स्टॉक में यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर? Herbs and spices should be used only lightly. ठीक है? Should never be dominant a stock or have a pronounced flavor. We will use the herbs and spices but very little amount. ठीक है? जैसे कि वो जो लिक्विड है बिन स्टॉक है वो ओ पावर ना हो जाए। क्लियर? शशद बेस, ठीक है, इसको बोलते हैं बुकेगाने, राइट? उसका एक फ्रेंच नेम है, उसे शशद बेस। Herbs and spices are usually tied in a cheesecloth bag and tied by a string to the handle to the stock pot so it can be removed easily anytime. It is easy to remove the herbs, right? For that reason. So here have the bukegane. The basic bukegane contains a leek, celery, thyme sprigs, bay leaf and parsley stem. But when it comes to Escoffier, so he said the classic bukegane is all about the parsley, thyme and bay leaf. Clear? Onion, ognon brûlé. Ognon brûlé. This is the French word of onion, ognon brûlé. Brûlé means burnt. Okay? So burnt onion you can say. For the color in stock, they burn the onion means half of the onions well caramelized and straight in the pot. It gives it color as well as a flavor. See, the one onion here, right? We just slice it half, and जो slice का जो अंदर का पार्ट रहता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? This is the flat top, okay? This is the flat top. They just put it over here, down side, down. Means जो onion रहेगा वो इस वाई में यहाँ पे जो कटा है, इस पोर्शन जो कटा हुआ है, इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? Juice of the onion will start caramelizing. The whole onion will start caramelizing. After that, we just dropped in the stock pot. ठीक है? It helps to give the color. Because that caramelizing will start giving a color to the stock. Clear? That's the reason we use the ognon brûlé or to give a good color to the stock. ठीक है? I hope you guys कि आपको ये पूरी तरह अच्छे से क्लियर हो चुका होगा स्टॉक और स्टॉक इंग्रेडिएंट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए और किस किस को अच्छे से हमें ध्यान रखना है एक अच्छा स्टॉक बनाने के लिए, राइट? और रू के बारे में और ग्लेस के बारे में लाइक लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स आई विल मेक अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। ठीक है? तो ये फर्स्ट पार्ट है, एक सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें कि पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अबाउट वेजिटेबल्स व्हेन कम्स टू वेजिटेरियन स्टॉक। ठीक है? देन आई विल एक्सप्लेन द रू, देन एक्सप्लेन द ग्लेज, many more things. ठीक है? Till then, stock. Bye bye.